कभी कभी ना लाइफ इतनी हेक्टिक हो जाती है कि हम खुद को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। स्किन ड्राई हो जाती है, लिप्स कॉन्स्टेंटली चैप्ड रहते हैं और हेयर बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं और समहाउ सेल्फ केयर हमेशा लास्ट में रह जाता है। लेकिन शायद कभी खुद का ख्याल रखने के लिए किसी रीजन की जरूरत नहीं होती है। तुम्हें एग्जॉस्टेड, स्ट्रेस्ड या कम्प्लीटली बर्नआउट होने का वेट नहीं करना चाहिए। सेल्फ केयर इजंट ऑलवेज एक्सपेंसिव स्पा डेज और लग्जरी प्रोडक्ट्स। कभी कभी सेल्फ केयर बस इतना होता है कि तुम स्लो स्किन केयर करो, कोजी शावर लो, प्लांट्स को पानी देना, पूजा करना और खुद के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना। So today is going to be a slow, cozy, self-repair kind of day. A day to heal my dry skin and maybe heal my mind a little too. So yeah, welcome to my self-care weekend reset. सबसे पहले फेस पे कुछ भी करने से पहले ना माई अपर लिप्स वर लिटरली स्क्रीमिंग फॉर अटेंशन और ऑनेस्टली मुझे थ्रेडिंग का पेन तो बिल्कुल भी पसंद नहीं। सो आई एम यूजिंग दिस ब्राउन मिनी फेशियल हेयर रिमूवर एंड जेन्युइनली दिस हैज मेड थिंग्स सो मच इजियर फॉर मी। नो कट्स, नो पेन, नो रेजर स्ट्रेस। बस सर्कुलर मोशन में यूज करना होता है एंड विद इन अ मिनट्स यू आर डन। और इसका बेस्ट पार्ट, इट हैज दिस टाइनी बिल्ट इन लाइट सो इवन द स्मॉलेस्ट हेयर्स बिकम विजिबल। स्पेशली अगर आप नाइट में यूज कर रहे हो तो इट हेल्प्स अ लॉट। और इसका क्लीनिंग प्रोसेस भी बहुत ज्यादा इजी है। जस्ट रिमूव इट्स अपर कवर एंड यू कैन क्लीन दिस कटेड हेयर प्रॉपर्ली एंड लिटिल थिंग्स लाइक दिस ऑनेस्टली मेक सेल्फ केयर फील लेस एग्जॉस्टिंग। नाउ फाइनली स्किन केयर टाइम। अगर आपकी स्किन भी मेरी तरह ड्राई, फ्लेकी या फिर स्ट्रेची फील करती है, ट्रस्ट मी, हार्श फेस वॉश और ओवर क्लेंजिंग स्किन को और भी वर्स कर देता है। ऑयल क्लेंजिंग इज ऑनेस्टली अ गेम चेंजर फॉर मी। मुझे पर्सनली बहुत सूदिंग लगता है बिकॉज इट जेंटली डेड स्किन को क्लीन करता है और विदाउट मेकिंग द स्किन फील टाइट। सो टुडे आई एम यूजिंग दिस ऑयल क्लेंजर। आई लाइक वार्मिंग स्लाइटली बिटवीन माई palms first and then gently massaging it into my skin. And honestly, this part feels less like skincare and more like therapy. Take your time with it, 2 to 3 minutes slow face massage. I know a few face massage techniques and trust me, it improves circulation, relaxes your face muscles and instantly makes you feel calmer. और एक बात मैं realize की हूँ कि sometimes we touch our phones more gently than we touch ourselves. So while doing skincare, slow down. Your skin feels its softness too. और अगर आपके लिप्स भी बहुत ड्राई है ना तो थोड़ा सा ऑयल क्लेंजर भी लिप्स पे अप्लाई कर सकते हो। ड्राई स्किन को हार्श ट्रीटमेंट की नहीं, नरिशमेंट चाहिए होता है। नेक्स्ट स्टेप इज स्क्रबिंग। A lot of people think that dry skin means you should never exfoliate, but honestly, gentle exfoliation is important. बस aggressively scrub मत किया करो. No harsh rubbing, no damaging your skin barrier. Just softly massage your skin with patience. और ears के पास भी product apply करना मत भूलना, because we always ignore those tiny areas. Now for face wash for dry skin, I personally love non-foaming cleansers because the more foam a cleanser creates, sometimes the more stripped your skin feels afterwards. I am using this milk and honey cleanser from Nivea, and honestly, ingredients like milk and honey are heaven for dry skin. They feel nourishing, soothing and comforting. देखो, barely any foam आ रहा है ना, and that's exactly what I want from a cleanser. Recently, I have also been loving this simple face wash. That one is super gentle too. I will also share all the products linked down in the description. Now comes my favorite part, homemade face packing time. There's something so calming about making skincare with your own hands. I am using this herbal powder that contains chandan and multani mitti. बट ड्राई स्किन के लिए एक मिस्टेक जो बहुत लोग करते हैं ना, वो ये है कि वो डायरेक्टली मुल्तानी मिट्टी को ना अपने फेस पे लगा लेते हैं और फिर क्या होता है ना, उनकी जो स्किन होती है वो ज़्यादा टाइट और स्ट्रेची होने लगती है। सो अगर आपकी स्किन भी ड्राई है, ऑलवेज बैलेंस इट विद नरिशिंग इंग्रेडिएंट्स। जैसे कि मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे टर्मरिक ऐड कर रही हूँ ताकि इसमें डार्क स्पॉट्स और पिगमेंटेशन के लिए काम करे। एंड देन आई एम एडिंग हनी बिकॉज हनी जो होता है ना वो डीपली नरिश करता है स्किन को। और थोड़ा सा मिल्क ऐड कर रही हूँ एंड लिटिल रोज वाटर फॉर स्मूदर टेक्सचर। एंड ऑनेस्टली लुक एट दिस टेक्सचर, ये बिल्कुल भी ओवरली ड्राइंग नहीं लग रहा है। एंड दैट्स द थिंग अबाउट स्किन केयर, यू डोंट नीड टू फॉलो ट्रेंड्स ब्लाइंडली। तुम्हें बस सही चीजें अपनी स्किन के लिए जो सूट करे उसे फाइंड आउट करना है एंड उसे अच्छे से समझना है एंड अप्लाई करना है। फेस पैक लगाना मुझे जेन्युइनली बहुत थेरेपी जैसा लगता है। कभी कभी ना स्लो मूवमेंट से ना माइंड को बहुत ज्यादा काम करता है। एंड यू कैन ऑलरेडी सी स्किन पे ये पैक टाइट या फिर अनकंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है। इट still feels comforting and hydrating because skincare should heal your skin, not punish it. 15 से 20 मिनट के बाद I removed the pack and went for a shower. And body care भी उतना ही बहुत ज़्यादा important होता है जितना face care. मैं harsh scrubs avoid करती हूँ because dry skin already sensitive होती है. So creamy mild scrubs are the best. It literally feels like shower gel के साथ थोड़ा सा gentle exfoliation हो रहा है. Skin soft भी feel होने लगती है और dry भी नहीं होता है.
And quick tip, if your body skin gets extremely dry, apply body oil before showering. Trust me, your skin feels baby soft afterwards. Okay, but honestly, post-shower skincare just feels different. And one very important thing, never apply moisturizer on completely dry skin. Always apply it on damp skin. Use rose water, face mist, or even plain water. Today I tried this face mist for the first time, but honestly I did not love it. I did not love it because it has fragrance, and my skin personally prefers fragrance-free products. Now, sunscreen, non-negotiable. This one has like very lightweight milky texture and blends beautifully into the skin. कोई भी white cast नहीं, heaviness feel नहीं होता है, just healthy glowing skin. And for the lips, this lip balm has genuinely become one of my favorites recently. इसके अंदर है ceramides and it helps so much with dryness and pigmentation. Especially जब lips completely chapped रहते हैं ना, this works really well. For body lotion, I am using this Vaseline coffee variant, and the smell literally feels like comfort in a bottle. Sometimes fragrances can genuinely change your mood. One thing I have slowly started understanding is self-care is not only about appearance. Mental peace matters too. The kind of calmness Praise gives you, it's very different. And I try reading Hanuman Chalisa whenever I can. Not perfectly, not every single day, but slowly, consistently, because healing isn't always about being perfect. It's about coming back to yourself again and again. For breakfast, I made simple upma and peeled an orange, and lately I'm trying to stop skipping meals because healthy skin doesn't always come from skincare products. It comes from inside. It comes from rest, it comes from water, nutrition, peace. And finally, my favorite part of the day, my plants. मैं कुछ दिनों के लिए घर गई थी तो मेरे प्लांट्स है ना काफी ज्यादा ड्राई हुए थे. अब इनकी ना ग्रोथ है ना काफी ज्यादा अच्छी हो गई है. ये प्लांट्स इतना ग्रो हो चुका है कि अब ये छोटे से पॉट में ना बिल्कुल भी प्रॉपर्ली ग्रो नहीं हो पा रहा है. So I decided to shift it into a bigger one. And honestly, working with soils feels so grounding. It reminded me of childhood, playing in mud without worrying anything about. And while repotting this plant, I realized something. Just like this plant needed more space to grow, maybe I also needed more care, more softness, more attention. Sometimes we don't need a completely new life. Maybe we just need better care. Today felt soft, slow, peaceful, and honestly I needed this. Sometimes healing doesn't look like huge achievements. Sometimes healing is just putting lip balm on time, drinking enough water, watering your plants, taking a long shower, or sitting quietly after puja. Small things but meaningful things. So if life has been feeling heavy lately, this is your reminder to slow down for a day. Take care of your skin, your body, your mind, because you deserve the same love that you keep giving to everyone else. And yeah, this was my little self-care weekend reset. I hope this video made you feel calm, cozy and comforted. Take care of yourself and I'll see you in the next vlog. Bye.